कुआलालंपुर से फ्लाइट लेकर मैं लंकावी पहुंची और अगली सुबह मैं इस खूबसूरत आइलैंड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ी। Hello, welcome back to the channel. After Kuala Lumpur, we are in Langkawi, which is an island in Malaysia. अभी फिलहाल हम 7 wells में हैं, जो कि 20 minutes का hike है. So let's get started with that. Tired of climbing the stairs, we have been walking inside this beautiful forest and बहुत अच्छा रास्ता बनाया हुआ है, like all stairs well maintained and it's free of cost entry. So we are halfway through into the jungle and ये यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है. People are taking a bath and this is a little small bridge जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू पॉइंट आ रहा है and that is the sea which is meeting the sky. This is the waterfall and this is coming from the 7 wells का peak. And अभी जहाँ तक paved area था properly वहाँ तक we've come, that is the halfway through. And इसके आगे we are literally going to get into the jungle, so we are actually taking a call कि जाना भी है या नहीं. But we are definitely going to take a dip into the waterfall. It turned out कि यहीं पे सारे 7 pools हैं, 7 wells हैं. So actually the pools हैं वहाँ पे छोटे-छोटे, that is called 7 wells. And currently I'm in one of the wells right now, and the water is so clear. और बहुत ठंडा भी है. Took me time to get inside, and नीचे सारे rocks हैं, so it is difficult to walk inside. Now we are going to go and slide on the rocks. Extremely fun. Like हमें भूख लग रही है, that is why we are about to leave. Otherwise हम यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था. Now we are headed towards another waterfall जो कि इसी premises में है. So we are very hungry, so not going to stay longer there. Oh my God, this looks so beautiful. मतलब अमेजिंग. मतलब जो ऊपर का पानी था वो यहाँ पे प्रॉपर वाला वाटरफॉल बन के आ रहा है एंड इट लुक्स सो गुड, लाइक अमेजिंग. Just in time for the sunset. It is almost like setting behind that mountain. It's beautiful. I'm happy that we were able to finally make it for the sunset because we were actually running late. After it turned dark, we saw fireworks happening, so we are here to experience that. So Langkawi turned out to be gluten free, so we are at this chocolate store and we are buying chocolates. जो हमें नहीं चाहिए हम वो भी खरीद रहे हैं बिना बात के. गिल्टी.
good morning from another day in Langkawi. So we also got alcohol yesterday क्योंकि वो भी duty free में बहुत ही सस्ती पड़ी हमें. For example, we got Jägermeister for 1200 rupees. So that was that. So we have like 1 hour more here before we leave for our next destination. So we thought क्यों ना कुछ देखा है जो हमारा कल मिस हो गया था. And that's the lovely view from my hotel. By the way, if I have not mentioned yet, we rented a scooty yesterday for 20 RM, which comes around 400 rupees, but वो 25 RM की थी. So just a suggestion कि अगर कहीं भी कुछ भी fixed price भी हो तब भी do bargain क्योंकि हो जाता है. Like chance लेने में क्या ही जाता है, right? So do that, and we are heading towards the points we want to see now. So we got our tank filled and यहाँ पे पेट्रोल 37 INR का कॉस्ट कर रहा है and that is way too cheap, okay? And हमने if you watch Kuala Lumpur vlog वहाँ पे हमने Beam जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो रेंट करी थी and that costed us 12 RM into 20. That is INR. So that is one of the lessons. Electric is expensive here and petrol is cheap. And I'm right in front of Maha Tower and we are going to enter now. देखते हैं क्या है. So we've come here and we got to know that the ticket is of 78 RM and if you come around sunset it is 90 ringgits. Ringgit or RM is the currency of Malaysia. ये 33 levels का है तो हम एक टावर में already हो आए हैं Kuala Lumpur, so we are not spending money here, but the view is amazing. So we have mountains here, we have the sea and again mountains. So that is a lovely view. And it is one of the tallest towers in the world. So if you're interested, you can visit this one. Eagle Square, or you can call it as Datarang Lang, and this is a representation of Langkawi. This eagle is the representation of Langkawi, and like eagle is so famous that people will take you on a ride and you will be watching. Eagle watching is an activity here. So that is that. Now we are going to get our ferry and head to the next destination. The prices just for fun at the jetty or ferry. It is costing us more here, like what we bought there for 69 RM. यहाँ पे हमें 82 का मिल रहा है, and what we saw the price as 138 RM there, वो यहाँ पे 170 का मिल रहा है. So there is a huge difference in the prices. तो हमने चेक इन कर लिया है. यहाँ पे चेक इन का मतलब ये है कि हमें कस्टम्स को क्लियर करना था क्योंकि हमने ड्यूटी फ्री चीज़ें ली है. तो हमें पर पर्सन 1 लीटर अलाउड है अल्कोहल में एंड 1000 RM ऑफ चॉकलेट्स अलाउड है पर पर्सन. तो इट इज़ अलाउड ओनली व्हेन यू आर स्टेइंग फॉर 48 आवर्स अप टू 30 डेज. सो दैट इज़ द लिमिट. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 30 मिनट्स पहले चेक इन करना होगा क्योंकि गेट्स क्लोज हो जाते हैं 30 मिनट्स पहले, बिकॉज द कस्टम ड्यूटी का पूरा प्रोसेस होता है. तो यहाँ से 2 ही मोड्स है, या तो फेरी से जा सकते हो या आ सकते हो, या प्लेन से आ सकते हैं जा सकते हो. एंड हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है वापस जाने में क्योंकि वी वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड अबाउट इट, बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो वी आर टेकिंग द फेरी बैक, देन रोड से हमें अपनी बस या ट्रेन लेना होगा टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो यस, आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम another vlog and do like, share and subscribe. Bye.